सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो है हमारे डोमिनर बाइक का टायर चेंज करेंगे फ्रंट वाला, और जो हमने मॉडिफाइड इसमें क्लच एंड ब्रेक लीवर लगाए थे दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आई थिंक इट मे बर्न माय क्लच। तो मैं उसे भी कंपनी वाले से रिप्लेस करने वाला हूँ। वहाँ जो खड़ा है मेरा बेटा वो लेके जाएंगे। चलो लेट्स गो। चाबी बाइक पे ही है। सो गाइस दैट्स माय ब्रांड न्यू टायर। So guys, that's my new tire, MRF Revs FC R17 tires. So guys, that's my new tire which came just today from Silapatra, and this is a TVS Euro grip and you can see the tread क्योंकि ये पूरा ख़त्म हो चुका है एंड स्किड होने का काफ़ी चांसेस है। एंड दिस वेयर द मॉडिफाइड क्लच एंड ब्रेक लीवर जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो वी आर गोना चेंज विद द कंपनी वन जो हमने गुवाहाटी से लेके आया लास्ट टाइम। सो चलो आप लेके चलो बाइक को फिर। तो बाइक में टायर और ये ले जाने प्रॉब्लम होगा, सो विल बी टेकिंग दैट इन माय फॉर्च्यूनर। सो नाउ माय ब्रदर इज टेकिंग द बाइक। So guys, as you can see my brother has gone, so हम भी चलेंगे अभी। So this is our beautiful Basar town. So we are going to make the tire changing in my brother's tire garage. So आप देख सकते हैं मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है। So guys, ये है हमारा लोकल जुगाड़, because we don't have paddock stand here, so we'll be using a jig to lift. भाई कुछ लेके आओ पीने के लिए ठंडा, या शॉप से ले लो ना कुछ। एक ठंडा रेड बुल दे दो भैया। We are now taking out the axle. तो गाइस टायर तो यहाँ निकल चुका है। Now we'll take out the air. So now we are taking out the tire from the LED. So guys, हमारा नया टायर फिटिंग हो चुका है यहाँ पे अभी। So guys, now we are doing the air refillment. So it's done. So guys, now we are changing the rear tire. And that's the new tire.
कैन सी अभी जो बाइक का टायर है लग गया. सो आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे अभी गैरेज में, जहाँ पे विल चेंज द क्लच एंड ब्रेक लीवर. सो गाइस अभी हम यहाँ से जाएंगे गैरेज की ओर. So guys, currently we are here at the garage, bike garage. So let's change the clutch and brake lever. So we are going to change this lever and this lever. So that's the genuine from the Bajaj. So this is how it looks like. So we got one lever and a bolt. So this is the clutch lever. So we're going to put it here. And I think this is the brake lever. So it comes with a bolt and nut. ये हमारा पोबिन भाई, बेस्ट मैकेनिक इन बसार टाउन, जो कि है अभी हमारा क्लच लीवर बदलने वाला है. ये अच्छा नहीं है ना, ये बहुत बेकार है ना, एकदम बेकार. इसको लगा के भी परेशान हो गया होता है ना. डीलर से इसलिए लेके आ गया इसका ओरिजिनल. Put both the screws and the lever is about to come out now. Okay, वहाँ भी एक बोल्ट रहता है, मुझे निकालना होगा. So now we are inserting the new clutch. It's done. काफ़ी तेज हो गया काम. So finally it's done. Now we are changing the front. So guys, now we are changing the brake lever, and we have got a new nut and bolt. So I'm planning to change it with the new one, and we'll keep the old one for the future. And this is a one-time tight nut. You can see that plastic locks and it won't open again. नया वाला लगा. So we'll put the new one. Old will keep it. So guys, finally it's done. So let's go. भैया कितना हुआ? So guys, that's the new Tyre. 2 sets of new levers. And lever काफी ऊपर है clutch, so I asked him to make it a bit low so that I can ride it comfortably. So guys, the vehicle has gone for a test drive, and after that he'll confirm and I'll take it back to the home. So there comes my bike. कैसा लगा? क्लच अच्छा है? लीवर के लिए प्रॉब्लम था ना. So guys, I have given my car to my brother. He will be driving and I'll be taking the bike. So guys, finally we are here at home. That's the look of my bike, and I have brought a Autolock Dominar kit 2.0. So we'll be putting that kit very soon, and I'll upload a full blog about that. So this is the stock
body. So guys, thanks for watching the video, and if you like this video, do like, comment and subscribe to my channel. Till then, bye bye, see you all.